CMA US salaries in India. Now this is a very popularly searched topic by a lot of students कि CMA US professionals typically India में कैसे jobs लेते हैं and what kind of packages are they offered. Now while I'll tell you everything about that, now I'm going to tell you a lot of reality that you need to know. I'm going to still take 2 steps back and first explain to you that आपको अगर costing या management accountant का expert बनना है तो what are the possible degrees? So there are 3 degrees in India that you could opt for. One is CMA India, which is called ICW. पहले ICW बोला जाता था, अब CMA India बोलते हैं. This is which has been there for the longest period in time. Then there's another degree called CIMA, which has also been around for quite some time. And now you have the CMA US, which is sort of making a lot of headway in India. बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स आप देखोगे CMA US कर रहे हैं. तो वो क्यों कर रहे हैं, किस तरह के जॉब्स ले रहे हैं और कैसे सैलरीज कमा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको सब कुछ आज बताने वाला हूँ. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैलरीज ऑफ CMA प्रोफेशनल्स. देखिए, अगर आप एक सिर्फ ग्रेजुएशन करते हैं तो टिपिकली यू कैन एक्सपेक्ट सैलरीज एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 2.5 to 3 lakhs per annum. ओके, अगर आप अपना ग्रेजुएशन के साथ साथ CMA US करते हैं, which typically is 2 parts, takes 1 year, okay, with an investment of about 1.5 lakhs all in all put together, you can expect a salary of anywhere between 4.5 lakh or 4 to 5 lakh of rupees. Now, इसके साथ साथ जब आप 2 साल काम कर लेते हैं, ओके, तो आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, CMA के दोनों पार्ट्स ऑफ द एग्जाम हो चुके हैं एंड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है, तो आपको CMA की डिग्री दी जाती है. यू कैन राइट CMA next to your name. And that is where you can look at a packages of anywhere between 5-6 lakhs and plus. Now मेरे हिसाब से it's a very good figure because I think ये एक ही ऐसी डिग्री है जो 1 साल में हो जाती है, unlike a lot of other qualifications जिसका टाइम इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है. इसका कॉस्ट इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ 1.5 लाख रुपए, everything put together, okay? And I think for the time and the cost involved, at the age of 20, if you have 21, if you have a job which is of 5 lakh or 6 lakhs, a very good start to have. अब आपका next question होगा, what does a day in the life of a management accountant look like? What do they exactly do? Come, let's find out. First things first, you need to understand कि एक management accountant जो होता है वो क्या करता है और how different his job is from a financial accountant. See, when you talk about financial accounting, it's post-mortem, right? After the transaction happens, आप उसको record करते हो, तो उसके related rules, regulations, procedures, compliances होते हैं, and that's how P&L accounts and balance sheets and financial statements are prepared. Now, management accounting is proactive, okay? Before the transaction has happened, आप जो सब सोच विचार करते हो, okay, that is management accountant. So typically, एक प्रोडक्ट को कैसे प्राइस करना, उसके कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना, कैसे मार्जिन्स कमाना, डे टू डे डिसीजन मेकिंग बिजनेस में कैसे करना, लॉन्ग टर्म डिसीजंस कैसे लेना, हाउ टू मैनेज द फ्लो ऑफ फंड्स इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ये सब चीज़ें एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट बेसिकली बहुत अच्छे से समझता है. सो दिस इज मोर प्रोएक्टिव इन दैट सेंस. सो इफ यू आर समबडी जिसको कंप्लायंस, रेगुलेशंस, रूल्स, उस तरह का कंटेंट नहीं समझ में आता है या नहीं इंटरेस्ट आता है, then management accounting in that sense is very, very proactive, right? I'll give you a very good example. Let's say the example of McDonald's, right? Now McDonald's sells its various food items and it's most popular of course being a burger. Now आप कोई भी आप McDonald's का food item ले, typically उसका average value is anywhere between 100, 150, 200 rupees, right? इतने साल हो गए, but still McDonald's is able to deliver firstly consistently. आप कोई भी स्टोर से आप खरीदो, the taste is the same. 2, it's able to sell its food at such a small, at this kind of price range, right? Now McDonald's must be doing so much of thinking into how to sort of manage its cost, what kind of logistics to use, what kind of technology to use, what procurement strategy to have, ताकि it can still have such a low cost, embed its margins and sell it at this kind of price and have that volume consumer. सो इस तरीके से हर बिजनेस को एक कॉस्ट, एक प्राइस, एक डिसीजन मेकिंग, एक प्लानिंग, एक बजटिंग, एक फोरकास्टिंग के लेंस से देखने वाला होता है एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट.